मुंबई येऊन कसं वाटतं? काय बोलायचं आहे का? हम आए थे सिद्धिविनायक टेम्पल। मुंबई देख के कैसा लगा आपको? वीडियो बना बहुत अच्छा लगा है। बस लोगों की यहाँ गर्दी और कुछ नहीं है। मुंबई अच्छा नहीं लगा है अभी तक, देखते हैं। पहले तो हम गणपति मंदिर आए हैं। रंजन गावाला गावाला महागणपती नांदला। सिद्धिविनायकचं दर्शन झालेलं आहे आमचं। आता आम्ही दुसरं मुंबईच्या ठिकाणी जाणार. प्रसादसाठी थांबणार आहे नाही, कारण तिथे पुष्कळ गर्दी आहे म्हणून आपली बाहेरच जाणार आहे डायरेक्ट. चला, गर्दी आहे म्हणते प्रसादसाठी. पाहू आता गर्दी पहा इथे किती आहे. इसका नाम है बेस्ट बस। वो है डबल डेकर बस AC वाला। याद ही नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस है वो। काढत आहे. मुझे लगा एलिफेंट जेट कुछ चलो होगा, यहाँ पे एलिफेंट दिखेंगे, बट यहाँ तो अभी तक देखा नहीं है। मुझे ये समुद्र ही दिख रहा है यहाँ पे। तो हम आए हैं एलिफेंटा केव्स, बट टाइम के कारण हम यहाँ तक ही पहुँचे। ये यहाँ पे ट्रेन है और ये बोट है यहाँ पे। कैसा लगा आपको एलिफेंटा केव्स, एलिफेंटा आइलैंड? एलिफेंट जेट्टी। चलो अब हम चलते हैं। यहाँ से लगभग कितने किलोमीटर है? यहाँ से लगभग हमें वी आर इन अ बोट राइड। दिस इज द स्मॉल आवड़ा फ्रूट। इट इज वेरी टेस्टी।
We can see the sunset from this boat. We are in a drive. We can see the clearly sunset view. My mom is very happy about this journey. She's wear a glass and seeing the beautiful sea. Look at this cruise, Cordilla cruise. This is an aerial view. Wow. So, hello guys, this is the night view of Mumbai. So you can see here the Taj Hotel and the Gateway of India. My camera is not up to the mark. This is the Gateway of India view. आम्ही आता नाईटमध्ये आलेलो आहे. इथे अमेझिंग व्ह्यू आपल्याला ताजचा आणि एक हा ओबरा हॉटेलचा पाहायला मिळतो. आतमध्ये जाणं शक्य नाही, तर आम्ही बाहेरूनच पाहून एकदम छानपणे लुत्फ उठवणार आहोत. तिकडे फोटो काढतात.